Hello, friends. Before I tell you about this company which is coming out with an IPO, a small request to you all, please subscribe the channel. चैनल को बड़ा करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को आप तक लेके आ सके। दोस्तों, स्मॉल डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में और क्या करने वाली है आगे ये इस कंपनी जो पैसा ही IPO से लेते हैं। चलिए मिलते हैं इनके मैनेजिंग डायरेक्टर से। नमस्कार दोस्तों, राजधानी दिल्ली से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आए हैं पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड जो कि बहुत जल्द अपना IPO लेके आने वाली है और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सेठ। आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी कंपनी के बारे में समझेंगे, ये आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं और ख़ास करके ये जो पैसा रेज करने वाले हैं उसको कहाँ यूटिलाइज़ करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Welcome to Purple United. Thanks for coming. थैंक यू सो मच। सर, हमारा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि आप ये बताइए कि आप करते कहाँ हैं और कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, प्लीज। Sure. Purple United Sales Limited officially incorporate हुई थी 2014 में. ओके But we started the kids business somewhere in 2017-18. ओके, इस business में हम कैसे हैं इसका मैं थोड़ा सा आपको brief background देता हूँ. प्लीज। Prior to this, we were associated with all the big names like Nike, Puma, Adidas, Hush Puppies in different capacity as their channel partner for their retail distribution. इसी कंपनी में? I have another entity. ओके, So, हाय। in the during our working with these brands, when we used to interact with the senior persons of these companies, there was a clear-cut gap that we used to see in the kids segment as a market. ओके, So that was a problem statement we identified, and that's and it was a clear-cut addressable market, and that's how we decided to start Purple United Kids. सो यू वांट टू फिल दैट दिस गैप Yes. जो कि आपको किड्स वेयर में दिखा। Definitely. अभी आप क्या करते हैं? रिटेल्स करते हैं, होलसेल करते हैं, क्या करते हैं, ये थोड़ा समझाइए हमें मैं सबसे पहले अपने विजन स्टेटमेंट के बारे में बोलना प्लीज। चाहूँगा. Our vision statement says we wanted to be the most admired kids premium fashion brand. एडमायर्ड। Yeah, most admired premium kids fashion brand. हाँ, And with the vision that we enable every children to express himself or herself using our brand as a medium. ओके, So that is the mission and vision, ठीक है। vision of the company. Now to achieve this, we are an omnichannel company. ठीक है। We operate in all the channels of our supply chain. ठीक है। We are into retail also. We have our own website. We operate in e-commerce also. We are doing key accounts also, and we are doing distribution and B2B business also. So through retail and e-commerce, primarily we are doing B2C, and through other channels we are doing B2B. कितने रिटेल आउटलेट्स हैं आपके आज के दिन में? Currently, we have 19 retail outlets, Okay. primarily focusing in North India. We have stores in Delhi NCR, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh. 3 more will be operational this month, two in MP and 1 in Punjab. Target that we are envisaging that we'll be having around 35 retail stores of company-owned, company-operated retail बाय stores. दिस ईयर एंड, By this. फाइनेंशियल ईयर एंड। Yes. ओके, आपका प्रेजेंस ई कॉमर्स में भी है आपने Yes. कहा। सो ई कॉमर्स में आपका, अगर मैं एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स की बात करूँ तो कितना परसेंटेज सेल्स थ्रू ई कॉमर्स आता है और थोड़ा कितना परसेंटेज सेल्स आपका मतलब जो रिटेल आउटलेट्स है वहाँ से आता है? Currently, if I talk of the contribution of each channel, retail currently contributes to 35%. ओके, But my learning has been with working with these bigger brands that future lies in the control business, and control business comes from the retail. ठीक है। So as I'm mentioning, we are aggressively expanding in retail. The contribution of retail will grow from 35 to 50% in the years to come. And currently, the e-commerce contributes around 18%. The rest all comes from the offline and the distribution channel. थोड़ी रिटेल स्टोर्स की जो है वो बात कर लेते हैं। क्या मॉडल पे आप काम करते हैं? इज इट थ्रू लीज्ड आप लेते हैं या फ्रेंचाइजी मॉडल है? क्या वहाँ पे मॉडल? So all the stores currently, all the stores are company-owned and company-operated. ओके, And internationally and globally, all the brands, all the international brands, they work on an asset-light model. So most of the properties are on lease basis, and selection criteria is very stringent to select a particular site. Okay, there are many parameters on which the stores are selected. ठीक है। And yes, and we prefer because our positioning is premium fashion, so we prefer premium malls, high हाई फुटफॉल वाले एरिया में high आपको? footfall areas.
or emerging markets like, let's say, Mohali. समझ Mohali or maybe the externals of Gurgaon or Noida. These are लेकिन upcoming बेसिकली आपका नॉर्थ में ही प्रेजेंस है yes, currently yes, but as far as the future plan is concerned, we, as I mentioned, now we'll be having 2 stores in this month in Indore campaign. Now we are going to the franchisee route also. We have signed one franchisee in Raxaul, that's the border of Bihar and Nepal. And we have signed one franchisee in Satna also. ठीक है And one more property we have signed in Bareilly. सो जियोग्राफिकली आप ग्रो कर रहे हैं Yes, and sorry to interrupt. Please. Just to add, since we are presence online also, so we are able to gain our customer confidence through online also. And the next strategy will be that we'll be positioning ourselves in the premium one for all the metros. ठीक है Strategy is very clear. For all the premium stores, we'll be operating directly. A and B plus stores. For B and C stores, because India is very vast, we cannot go anywhere. We'll be going to the franchise. सर आपने कहा कि 50 स्टोर्स यू आर एमिंग टू ओपन बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल Sure. सारे क्या आप लीज्ड ओन मॉडल में करना चाहेंगे या फ्रेंचाइजी या कोई मॉडल आपने सोचा Broadly there are 2 models. One is the COCO and second is the franchisee. ठीक है COCO stores will be directly done by us, and franchise store will be partnership. Will do the partnership with the respective. So how you are planning to go ahead? Are you planning to go ahead with the COCO model or the franchising model? As I mentioned, it will be mix and match. All premium and high street stores will be COCO model. But the franchise model is not yet tested. All the outlets that are open right now are on COCO model. On COCO model, but yes, we have started our journey for franchising model. Okay. And I can say I've seen the other side of the table because I was a franchisee retailer for a So bigger that brand like experience my helps sister. you. Yeah, So give us a little idea about the sourcing of the goods that is there. you can. How do you source? And Definitely. tell us a little bit about the warehouse that we visited. Yeah, sure. Broadly, we have 2 product category. One is the apparel and footwear. Okay. So here you see the entire design team and sourcing and quantity team. They work hard to get the product from the factory. And let me clarify this: we are not a factory. So we are in a sourcing model, and it has been strategically decided. Okay. We want to focus towards the customer, ठीक है acquisition of customer, instead of setting up a factory. And again, it is a sort of asset-light model. And in apparel and footwear, there are so many subcategories. One factory cannot produce everything. SKU is huge. Not even SKUs, the categories. For example, you have woven, knitted, अच्छा हाँ winter wear, denim. One factory cannot produce everything. Correct. Similarly, in the footwear also, footwear is slightly technical. Then we have flip-flop, open clogs, being the open footwear, sandals also, ballerina, sports shoes and casual shoes. One factory is not specialized to produce maybe more than 2 categories. So dependency upon one factory cannot be there. So we have multiple partners who specialize in 1 or 2 particular categories, and we have identified 2-3 factories, primarily in Delhi NCR. We are in Noida. Noida is the main one of the biggest hub for apparels, and subsequently we get our footwear manufactured from Delhi NCR, and apparels also go. Some factories are in Tripura also, and 1 or 2 factories in Ludhiana also for winter. ठीक है So before we ask you questions about the retail outlets that you have, I want to ask few questions regarding the financials. So give us some idea कि आपने last audited में क्या last year में क्या report किया और आने वाले साल में आप क्या project कर रहे हैं? Sure. Last year we did top line of 43 CR with a PAT of approximately 4.22 CR. This year we're projecting a top line of 78 CR. Okay. Again with a PAT of approximately 10%. So 10%. It will be somewhere around 8, around 8.5 CR. You can say. ठीक है आने वाले दिनों में आपको मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ से दिख रहा है? As I mentioned, या इसमें स्कोप नहीं है? there is a lot of scope. Because as I mentioned, we are expanding our control business, that is retail, and we are definitely going to utilize our economies of scale as and when the number grows. Okay. So from here we see the margin will increase, because as and when the number of stores grows, we will be having a better repeat rate of customers. Okay. And this will help us in getting our gross margin.
aligned to our objective of, let's say, 58 to 60%. So store level पे क्या आपका margin है? EBITDA Store level level पे? EBITDA is what we are able to generate. Maybe I can talk for the last Yeah. this financial year only. Yes, sure. Approximately 21% is the EBITDA that we achieved At the store level. At the store. And for the net profit level, you are reporting a 10%. It will be 8 to 10% because first quarter is primarily for the summer where the ASPs are relatively less. Second half of the financial year is our main season. Okay. Because of the winter wear, because of the higher ASPs, and in winter wear, it is a need-based buying. T-shirt is for $7.99, sweatshirt is for $18.99. So automatically, or maybe the jacket is for $3,000. Automatically, the bill value or the customer spending increases because of the nature of the winter season. And to add it, there are festival season to support the buying. सर अब हम आपके रिटेल स्टोर्स के बारे में जानना चाहेंगे, तो अभी हमें थोड़ा रिटेल स्टोर्स के बारे में बताइए. Definitely, for retail stores, I would like you to introduce to the other director of the company, sure. Mrs. Bhavna Singh, okay. Who is also full-time involved in the business. Oh. She happens to my spouse also. Oh. So it's a couple-preneur, as they call it. You can say that, and we are fully involved in this business. Okay. And now we are nursing this baby of Papa United States. So nice. So shall we move? Sure. Yes, sir. Yeah, Vishnu. She's Mrs. Singh, full-time director. Hello, ma'am. Mr. Vishnu from Top Now. Nice to meet you. Thank you so much. She takes care of designing, sourcing, and a lot of retail operations. Oh. So she will give you a very good insight into what is happening as far as the product and retail is concerned. So thank you, sir, उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए. थोड़ा हम उनसे बात करते, फिर हम आपके पास वापस आएंगे, थोड़ा बिजनेस के बारे में और समझेंगे. Please make sure. Thank you. मैडम, मिस्टर सेठ से हमने बिजनेस के बारे में समझा, एक ओवरव्यू भी लिया, वेयर हाउस के बारे में भी हमने समझा, रिटेल स्टोर्स मैंने एक विजिट भी किया, अपनी बच्ची के लिए कुछ शॉपिंग भी की है. थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताइए हमें, क्या यूनिक है आपके प्रोडक्ट्स और क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्या थॉट है इसके पीछे, ये थोड़ा समझाइए हमें. Okay. Yeah. Krishna, to begin with, the products जो हम लोगों के हैं, they are first of their kinds, specifically and so versatile for all the kids and all age group. So you can say कि कोई भी एक बच्चा हम लोगों की ब्रांड के साथ अगर एसोसिएट एक इन्फेंट्स की एज पे होगा, सो वी बिलीव कि उसकी जर्नी हमारे साथ एक 14 साल के बच्चे तक के लिए साथ में चले. थॉट एग्जैक्टली इसी स्टेज से इन्फेंट से लेकर एक 14 साल के बच्चे के लिए इसीलिए क्योंकि वो सारे ही उसी एज ग्रुप में स्टैंड करते हैं एंड दे ऑल आर किड्स. ओके, सो कैन यू शो अस फ्यू ऑफ योर प्रोडक्ट्स? यस, टू बिगिन विद आई विल स्टार्ट विद द अपैरल्स रेंज. ओके. उसके बाद मैं आपको फुटवेयर भी लेके जाऊंगी. ठीक है. क्योंकि ये दो मेन कैटेगरीज हम लोगों की ब्रांड के साथ एसोसिएटेड. ठीक. सो आई विल स्टार्ट विद दीज प्रोडक्ट्स. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स क्योंकि अब फेस्टिव सीजन है और इन सब चीज़ों की एक रिफ्लेक्शन, एक ब्राइटनेस, उन सब चीज़ों की डिटेलिंग्स पे इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. बट प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि किड्स का प्रोडक्ट है, तो हम सिर्फ फैशन नहीं सोच सकते. फैशन के साथ हमारे ये लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है. ओके. तो हमारा एक मेन फोकस ये रहता है कि हम 3 F's पे काम करते हैं. अच्छा. फर्स्ट इज फन, दैट इज बिकॉज हम बच्चों के लिए. ठीक है. फैशन, बिकॉज ये हमारे ब्रांड के साथ एक एसोसिएशन है. जो भी पेरेंट्स हमसे अटैच होते हैं तो उनके लिए वो फैशन को ही देखते हुए आते हैं. ठीक है. थर्ड कम्स द फंक्शनैलिटी, जिसके लिए हम बोलते हैं कि वी आर द एक्सपर्ट्स, जस्ट लीव इट टू अस. अच्छा. तो फोकस इज, अगर आप ये गारमेंट लेते हैं, यू हैव अ स्पेसिफिक माइंड कि एक ओकेजन है, मुझे ये डालना है, बट यू कैन नॉट कीप इट ऑन योर वार्डरोब ऑल द टाइम. यू नीड टू बी विद दिस थिंग कि कहीं भी ओकेजन पे, किसी भी एक पर्पस पे अगर मुझे जाना है तो दैट शुड बी देयर विद दिस थिंग. सो दीज आर द थॉट्स व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स कि जब बच्चा है वो अपना एक पर्पस पूरा नहीं करे, इट शुड बी कि हर जगह पे उसको उसका कंफर्ट, उसकी स्टाइलिंग उसको हर प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती रहे. अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, वेयर डू यू स्टैंड इन व्हेन यू कंपेयर विद योर कॉम्पिटिटर्स? प्रीमियम डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस इन दैट. ओके. सो दिस इज ऑल एन इम्पल्स बाइंग. इसमें जो पेरेंट्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं ना, सो दे डोंट लुक फॉर द प्राइस पॉइंट, बट येस एवरेज प्राइस पॉइंट्स मार्केट के साथ कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है.
लेकिन प्रीमियम थॉट्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए डेफिनेटली वी डोंट फोकस ऑन। ठीक है। सो एक आपने अभी एपरल दिखाया, दूसरा क्या सेगमेंट आप दिखा रही थी? दूसरा इसी के साथ एसोसिएट करते हुए आई शो यू अनदर सैंपल विद दिस थिंग कि अब जो प्रोडक्ट्स आएंगे दैट इज ऑल फुटवेयर। ओके। फुटवेयर क्योंकि डाइवर्स कैटेगरीज हैं, इफ आई टॉक ऑफ गर्ल्स इज अ डिफरेंट कैटेगरी, बॉयज गोज टू अ डिफरेंट जर्नी। गर्ल्स क्योंकि फेस्टिव कॉल्स है तो डेफिनेटली ये सब ग्लिटरी प्रोडक्ट्स पे अभी वी आर स्टार्टेड लाइक विद दिस थिंग, दिस विल बी ऑन द glitter parts, ballerinas है, fashion है. So is it more you are focusing on the girls part? No, we have the balanced kind of a thought towards it. Girls and boys, that is what I told you with this thing in the beginning, that if I talking of a kids category, I cannot split it into age as a segment. I cannot split it into the concept कि मैं ये कहूँ कि ये गर्ल्स के लिए एक ब्रांड है, ये बॉयज़ के लिए एक ब्रांड है. हम लोगों की ब्रांड की यूनिकनेस ही इसी में है कि हम ऑल किड्स को ही कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा हमें डिज़ाइन के बारे में बताइए, क्या डिज़ाइन आप क्योंकि आप सोर्सिंग ऑफ जो आपके प्रोडक्ट्स है वो बाहर से करते हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन यू गिव टू द पार्टीज, राइट? लेकिन डिज़ाइन कहाँ करते हैं? डिज़ाइन इन हाउस है या ये भी आउटसोर्स करते हैं? नो, डिज़ाइन इज टोटली इन हाउस. ठीक है. डिज़ाइनिंग शुरू करने से पहले वी जस्ट गो हेड विद द लाइक लॉट्स ऑफ रिसर्च इज डन. अच्छा. इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या है, ओके. कलर फोरकास्ट क्या है, how the market is behaving, what was the experience last year, what innovation needs to be taken care of this year. Okay. So this, like with this aspect, we start with the designing, and designing se pehle thought process, research, every such thing takes care. Then the design part is important. Designing is emphasized more on the season. वो बहुत important हो जाता है कि अगर समर सीजन है तो हमें कॉटन ड्रेसेस में क्या वाइब्रेंस लाने हैं, कितने सॉफ्ट कलर्स लेने हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए. क्या ये स्टार्ट करने के पहले आपका क्या बैकग्राउंड था? आप कितना अच्छा डिज़ाइन को समझती हैं? Vishnu, if I give you a true fact with this thing, since my childhood I was really fascinated with the fashion industry. Okay. Though I did not get the opportunity to have that kind of academic exposure in that, but destiny put me into this kind of a situation that I was running a fashion institute for myself for 10 years before going in with this. That's great. Oh, wow. So that experience is now helping you a lot, right? This was the, I can say, the dream come true for me to get associated with this kind of a thought, designing and going ahead with this kind of a brand association. That's something, a dream come true. Thank you so much, madam, for your time. All the best wishes from us and our viewers for the upcoming IPO. अब हम थोड़ा सा मिस्टर सेठ से एक विजन और इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे. Again wish you all the best. Thank you for Thanks so much. Thank you so much. So friends, let us go to Mr. Seth again and let us understand the vision of the company and the industry. ये कितना बड़ा टाइम है, बहुत सारी कंपनियां हम देख रहे हैं अभी ये किड्स वेयर, प्रीमियम किड्स वेयर में आ रहे हैं. एक बात दोस्तों आपसे जो बहुत ज़रूरी करनी है कि आप लोगों में से बहुत जन है जो कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बड़ा कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और कंपनी के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल पाए. दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से ताकि आप इस कंपनी को और बेहतर तरीके से जान पाए. ये कोई बाई और सेल कॉल नहीं है. चलिए वापस चलते हैं मिस्टर सेठ के पास. Friends, I hope you have subscribed the channel by now and again we are joined by Mr. Seth and we'll ask him two final questions. Sir, पहला प्रश्न, एक बार इंडस्ट्री के बारे में बताइए. How big is the industry? कुछ नंबर्स अगर आपके पास है तो. The kids industry is particularly apparel is 1,25,000 crores as per the industry data. Okay. And it is growing at a CAGR of 11%. Okay. And most interestingly, 50% of the market is unorganized. So there is a huge gap for the organized player to enter into this market. So that's why we say kids business is no kidding business. So 60,000 is organized. इसमें 60,000 crore is organized. इसमें largest player कौन है? See, the industry is very much fragmented. Okay. As per a recent study done by one of the industry experts, there are luxury brands, then all segment brands. Then we have boy-centric brands or sports-centric brands. And plus we have junior brands and value brands. बहुत ज़्यादा fragmented. बहुत ज़्यादा fragmented है. So there is no such solution being provided by one player. We provide a one-stop solution from 0 to 14 years. And as per the industry report, we have been classified as a all-segment brand. ठीक है. लास्ट प्रश्न सर, आप IPO पे जा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सब बढ़ जाएगी क्योंकि पब्लिक मनी आपके कंपनी में आ रहा है.
एक शेयर होल्डर हमेशा एक लार्जर पिक्चर को देखना चाहता है। 5 साल का विजन दीजिए, आप कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? Sure. Deriving from my vision statement, we wanted to be the #1 kids premium fashion brand, ओके, and we do not see any brand targeting that segment. So that is very exciting segment that we are focusing on. We wanted to have our presence and footprint across India. We want Okay. to have an all India presence, and we envisage in the next 4-5 years we'll be having a 250 plus stores operating pan India, ओके, with a top line of at least 500. Yeah, that is you can say my wish list, my personal goal, and now you can say the goal of my entire organization. so thank you so much for sharing your thoughts. Thanks for All the coming. best wishes from our side and from our viewers for the upcoming IPO. May you achieve your target before time. Thank you Thanks for for being coming. with Thanks us. for your time. Thanks for coming. Thank you. Thank you. तो दोस्तों, ये थे मिस्टर सेठ और हम आए हैं पर्पल यूनाइटेड सेल्स में। कंपनी बहुत जल्द IPO लेके आने वाली है। हमारे हिसाब से हमने सब चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की, कंपनी के विजन, कंपनी का बिजनेस, सब कुछ हम आपको बताने का कोशिश किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी, नए प्रमोटर के साथ। तब तक अलविदा, खुश रहिए, नमस्कार।